एंड आई थिंक ये सेकंड पेज से स्टार्ट करना है, राइट? That's Kushal already Right. read it. Yes. Right. थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा आई थिंक आज एक दो लोग मुझे नए दिख रहे हैं। तो yesterday हमने कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर पढ़ा था, राइट? कोई समराइज करेगा कल के सेशन को? Remember a little bit actually that was basically to study the balance sheets and artifacts of companies is covers under the fundamentals and how to analyze them in the mathematical manners or in case of technical manners so that we can leverage the values or information which we get it out of the fundamental analysis that has राइट, been राइट। described here in. Okay, so नाउ something to add. So, kal basically क्या होता है, एक short summary that we started with the introduction of the book, how the writer is telling that कि उसको एक इस बुक को लिखने में उनको 7 साल लग गए, एंड कैसे वो साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करे, एंड साइकोलॉजी क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर की जिंदगी में, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। एंड देन ही मेड अस अंडरगो अ सर्वे कि 30 क्वेश्चंस का हमने सर्वे किया। देन द फर्स्ट चैप्टर दैट स्पीक्स अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस, कि हाँ उस टाइम पे कुछ ही लोग करते थे। आई एम टॉकिंग, दिस इज द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट 1978 का टाइम है। देयर वर ओनली फ्यू who knew technical analysis and they were least called as crazy, right? And राइट, fundamentally zyada karte the reading books, reading the balance sheets of the company, reading other financial statements or about the weather reports and other things, usko uske basis pe trading hota tha, but technical is also important. So itna abhi yahan pe ek introduction ho gaya hai. Now next is the shift to technical analysis. एनालिसिस, राइट, वेरी नाइस। सो आज कुछ नए लोगों को मौका देते हैं। हु वुड लाइक टू रीड? I can begin with. या श्योर, एनी, Okay. थैंक यू। The shift to technical analysis. Para 1, technical analysis has been around for a long, as there have been organized market in the form of exchanges, but the trading community didn't accept technical analysis as a viable tool for making money until the late 1970 or early 1980s. Here, what the technical analyst knew that it took the mainstream market community generations to catch on to. Finite number of traders participate in the market on any given day, week, or a month. Many of these traders do the same lengths of things over and over in their attempts to make money. In other words, individuals develop behavior patterns, and a group of individuals interacting with one another on a consistent basis form collective behavior patterns. These behavior patterns are observable and quantifiable, and they repeat themselves with statistical reliability. Technical analysis is a method that organizes the collective behavior into identifiable patterns that can give clear indications of when there is a greater probability of one thing happening over another. In a sense, technical analysis allows you to get into the mind of the market to anticipate what likely happens next based on the kind of patterns the market generated at some previous moments. As a method of projecting future price movement, technical analysis has turned out to be a far superior to be a purely fundamental approach. It keeps the trader focused on what the market is doing now in relations to what it has done in the past, instead of focusing on what the market should be doing solely solely on what is logical and reasonable as determined by the mathematical model. On the other hand, fundamental analysis creates what I call a reality gap between what should be and what is. The reality gap makes it extremely difficult to make anything but very long-term predictions that can be difficult to exploit even if they are correct. Okay. In contrast, technical analysis not only closes the reality gap but also makes available to the trader a virtual unlimited number of possibilities to take advantage of. The technical approach opens
up many more possibilities because it identifies how the same repeatable behavior pattern occurs in every time frame. Movement, you have just, can you scroll up? Yeah. Time frame, movement to momentum, to movement, daily, weekly, yearly, on every time span in between. In other words, technical analysis turns the market into an endless stream of opportunities to enrich oneself. So, summary of this is, although the market had people are doing the market since long, using the market trading, doing the from since long, but technical analysis was not in picture very much till the 70s or 80s, and slowly they have started projecting based on the technical analysis. And initial technical analysis used to be happen based on the collaboration between the different group of people. They used to collaborate, they used to talk, they used to discuss on certain things, market behaviors, market studies in the past, and based on that they used to predict the they used to anticipate the next movement of market. And based Right. on that it was completely you can say predictions based. And like if I talk about in a general means, like those people, those who are in the top notch of market, if they are discussing that this will could be a better share or this could be a better opportunity, so they used to be probably a more important driver of the market that time, and they used to take the market that way. Right. uh, Right. and but it had a big gap in between, which they call it as a reality gap. What should be and what is actually, that was the major challenge which they have realized during the this kind of a discussions and happening. And later on they like the actual technical analysis will be based on this reality gap, and actually it will platform, or it will give a better options of presenting in a graphical or some other technical methods will come up based on this reality gap only. Right. That Right. become a need of basically to make it more technical or analysis, uh, mathematical analysis based on this reality gap. से ये कंप्यूटर्स और ज्यादा एडवांस हो गए हैं और ज्यादा रोबोटिक्स भी आ गया है, एआई आ गया है, नए नए, और जितने भी इंडिकेटर्स आते गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उसमें और ज्यादा उलझते गए, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हो गई, किसको यूज करें किसको यूज ना करें। तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर उस फ्रेमवर्क में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, सो एक एक इसका थोड़ा समरी, थोड़ा टेक अवे ये था कि एज अ ट्रेडर लोग मार्केट में आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, एंड ओवर अगेन सेम ही चीज कर रहे हैं। तो वो जो सेम चीज कर रहे हैं उनसे इंडिविजुअल का एक बिहेवियर पैटर्न डेवलप हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बन जा रहा है जो वो पैटर्न को डेवलप कर रहे हैं, एंड देन इट सेज कि जो कलेक्टिव बिहेवियर है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वांटिफाइबल मैनर में, इन एंड दैट कैन बी सीन इन विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये पैटर्न्स हमें ऑब्जर्व हो जाते हैं। एंड इसमें टेक्निकल एनालिसिस में अनदर बिग पॉइंट दैट हिट मी वाज दैट इट टॉक्स अबाउट द present and the past price action and the what is happening now and what has happened, उसके बेसिस पे हम आगे क्या कर सकते हैं, राइट। रादर देन जो दूसरा अप्रोच है वो ये प्रेडिक्ट करता रहता है फंडामेंटल की, अरे इसका इसका बैलेंस शीट अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा है, अच्छा ये फ्यूचर में अच्छा ही होगा, राइट। वो एक सपोजिशन है, राइट। इसमें जो हो रहा है, इसमें इसमें लाइक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो हो रहा है हम वही करेंगे, जो दिख रहा है हम वो वही करेंगे। करें। राइट। यस, सो इट टॉक्स अबाउट नाउ एंड it shows the past and present. So वो मेरे को बहुत अच्छा इसमें लगा कि definition हाँ। of technical analysis, and that's how राइट। this is a bit superior than fundamental analysis. And नहीं, let's वो see what मैं टोटली बिलीव करती हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं right, कितनी चीजें देखती हूँ जो फंडामेंटल एनालिसिस या उस कंपनी के बारे में पर्टिकुलर न्यूज मुझे 2 दिन बाद पता चलती है, और सर जो right, है वो उसको बोलते हैं मुझे चार्ट पे 2 दिन पहले ही दिख रहा था। अभी उधर क्या right, हो रहा है मुझे नहीं पता, उधर कौन सा right, युद्ध होने वाला है मुझे नहीं पता, बट मुझे चार्ट पे ये दिख रहा है कि ये होगा। So correct, this is how correct, technical analysis helps you if actually you are learning in a proper manner, right? yes, So yes, very nice. Let's shift the uh, shift to mental to analysis, mental right? analysis. Yeah, Which is really very important. technical analysis works so well
why would more and more of the trading community shift their focus from technical analysis of the market to mental analysis of themselves, meaning their own individual trading psychology? To answer this question, you probably don't have to do anything more than ask yourself why you bought this book. The most likely reason is that you are dissatisfied with the differences between what you perceive as the unlimited potential to make money and what you end up with on the bottom line. That's the problem with technical analysis, if you want to call it a problem. Once you learn to identify patterns and read the market, you find there are limitless opportunities to make money. But as I'm sure you already know, there can also be a huge gap between what you understand about the markets and your ability to transform that knowledge into consistent profits or a steadily rising equity curve. Think about the number of times you have looked at a price chart and said to yourself, hmm, it looks like the market is going up or down, as the case may be, and what you thought was going to happen actually happened, but you did nothing except watch the market move when you anguished over all the money you could have made. There's a big difference between predicting that something will happen in the market and thinking about all the money you could have made, and the reality of actually getting into and out of trades. I call this difference and others like it a psychological gap that can make trading one of the most difficult endeavors you could choose to understand, and certainly one of the most mysterious to master. The big question is, can trading be mastered? Is it possible to experience trading? Is it possible to experience trading with the same ease and simplicity implied when you are only watching the market and thinking about success, as opposed to actually having to put on and take off trades? Not only is the answer an unequivocal yes, but that's also exactly what this book is designed to give you: the insight and understanding you need about yourself and about the nature of trading. So the result is that actually doing it becomes easy, simple, and stress free, as when you are just watching the markets and thinking about doing it. This may seems like a tall order, and to some of you it may even seem impossible, but it is not. There are people who have mastered the art of trading, who have closed the gap between the possibilities available and their bottom line performance. But as you might expect, these winners are relatively few in number compared with the number of traders who experience varying degrees of frustration, all the way to extreme exasperation, wondering why they can't create the consistent success they so desperately desire. So basically, the author spoke about the fundamental analysis, then said technical is better, and then the main is mental analysis. Why are you here? So the reason that we are reading this book is because हमें लगता है that something is still missing, and that's in itself the answer. कि अगर TA आ गया, अगर technical analysis आ गया, तो success क्यों नहीं आया, right? So knowing that gap is basically the mental analysis. And जैसे हम देखते हैं मार्केट को वॉच करते हैं कि देखो अभी ये होगा, हमने एनालिसिस किया, अभी ऐसे ऐसे होगा, वो वैसा कर लेता है, बट हम कुछ कर नहीं पाते, हम ट्रेड नहीं लेते, या फिर वो बोलते हैं मुंगरी लाल के हसीन सपने, ML ट्रेड, कि हम देखते ही रहते हैं। अगर मैंने एक लॉट की जगह 100 लॉट मारा होता तो मेरे आज जितने लाख या इतने करोड़ बन गए होते। सो पर वो आपका दिमाग में होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता है, राइट? सो ML ट्रेड उसको बोल सकते हैं, मुंगरी लाल ट्रेड। सो वही है कि एक्चुअल हम ट्रेड करो, सो इट शुड बी, तो इसका पर्पस ये है कि योर ट्रेडिंग शुड बी इतना आसान कि द वे यू वॉच and you think about it, utni hi aasani se you press that entry button and that exit button, that's it. So without any stress free, easy and simple.
तो वही इसका एम है। और वो कैसे पॉसिबल है कि अगर आप अपने मेंटल एनालिसिस या साइकोलॉजी को समझे, और ऐसा नहीं है कि मास्टर नहीं किया जा सकता। हाँ, अभी कम लोगों ने मास्टर किया है, बट यस, ये पॉसिबल है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इवन ईच वन ऑफ अस सिटिंग हियर ऑन दिस कॉल कैन डू इट। राइट, दैट्स द समरी ऑफ राइट। दिस। वेरी नाइस। एक्चुअली में मुझे यही लगता है कि किसी भी स्किल की बात करें हम, छोटी, चाहे आप कुकिंग की बात करें, डांसिंग की बात करें, स्विमिंग की बात करें, ड्राइविंग की बात करें, पहले दिन तो किसी को भी मास्टरी नहीं होती है ना। और थोड़े बहुत उसमें झटके लगते ही, राइट। लेकिन कुछ लोग वहीं पर कहते हैं कि यार स्विमिंग अब नहीं हो सकती, हमसे नहीं हो सकती, ड्राइविंग मैं नहीं कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग उसमें नहीं डरते हैं और कहते हैं यस आई कैन डू इट, और मैं मतलब कर सकता हूँ, राइट। या तो आपका पैशन हो या नहीं तो मजबूरी हो। अभी बिकॉज ट्रेडिंग में रियल मनी इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इसीलिए इतनी सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। तो इस स्किल को भी अक्वायर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो आप सर के साथ सीख ही रहे हैं। और मेंटल एनालिसिस हम इस बुक से करेंगे। सो थैंक यू सो मच खुश के लिए, एंड विक्रम जी के लिए जोरदार तालियां सबकी तरफ से। यस मैं प्रकाश जी, प्लीज, प्लीज गो अहेड। trading presents us with a fundamental paradox. How do we remain disciplined, focused, and confident in the face of consistent uncertainty? When you have learned how to think like a trader, that's exactly what you be able to do. Learning how to redefine your trading activities in a way that allows you to completely accept the risks is the key to thinking like a successful trader. Learning to accept the risk is a skill trading is is a trading skill, the most important skill you can learn. Yet it is rare that developing trader focus. Please scroll down one sentence down. And any attention to expend any effort to learn it. When you learn the trading skill of risk expectations, the market will not able to generate information that you define or interpret as painful. If the information the market generates doesn't have the potential to cause you emotional pain, there's nothing to avoid. It is just an information telling you what the possibilities are. This is called an objective perspective, one that is not sick, one that is skewed, not skewed skewed, or skewed. I can't Yeah, pronounce it very well. yeah, sure. Distorted by what you are afraid is going to happen or not happen. I am sure that there isn't one trader reading the book who hasn't gotten into trades too soon before the market has actually generated a signal, or too late, long after the market has generated a signal. What the trader has convinced himself not to take a loss as a result, had it turned into a big one. One got out of winning trades too soon, or found himself in winning trades but didn't take any profits at all, and then let the traders turn into losses, or move stop loss closer to his entry point, only to get stopped out and have the market go back in his direction. They, sorry, these are but a few of many errors traders Perpetuate, perpetuate. perpetuate upon themselves time and time again. These are not market generated errors. That is, these errors do not come from the market. The market is neutral in the sense that it moves and generates information about itself. Movement and information provide each of us with the opportunity to do something, but that's all. The market don't have any power over the unique way in which each of us perceive
and interprets this information or control of the decisions and action we take as a result. The errors I already mentioned and result of what I call faculty trading attitudes and perspective Perspectives. faculty perspectives faculty attitudes that foster fear instead of the trust and confidence. क्या बात है प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, वंडरफुल, जोरदार तालियां। प्रकाश जी, क्या समझ में आया? अपनी लर्निंग शेयर कीजिए, या कोई और भी So शेयर कर सकते हैं। first of first of thing that the trade the means we have to accept what the market is giving us, and we have to take our targets and stop losses at means when sorry we have to take our targets and stop loss significantly, because when markets give us a profit we did not book it. We think that okay, my target has been come, but I will wait for some few more bucks to get in my direction. The trade is going in my direction, and I will continue in Hindi. मतलब ट्रेड राइट। आपका जो है वो चल रहा है, मतलब प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, पर उसमें भी क्या करते हैं लोग कि अरे अभी सपोज एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 है और उसको उसका टारगेट है 110, तो पर वो बुक नहीं कर रहा है प्रॉफिट उस वक्त। वो सोच रहा है कि अरे 110 आ गया है तो अभी क्या करें, हम 115 के लिए वेट करते हैं, और फिर वो ट्रेड 110 से घूम जाता है। और जब वो ट्रेड 100 पे आता है तो वो सोचता है कि अरे 100 पे हम निकल जाएंगे, पर वो 100 पे सोचता है, जब वो एक्चुअल 100 पे आता है स्टॉक तो वो सोचता है कि अरे मेरा 10% तो चला गया प्रॉफिट, अभी तो मैं हाँ। कुछ प्रॉफिट ही नहीं बना रहा हूँ, और वो फिर लॉस में कन्वर्ट होता है। तो जब लॉस में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है, फिर वो वहां पे निकल नहीं पाता है। उसने ट्रेड लिया था एक टाइम फ्रेम पे और वो निकल नहीं पाता है उसमें से। और फिर जब वो ऐसे ही वो इन्वेस्टमेंट में मतलब फंस जाता है, वो कभी बेच नहीं पाता है वो स्टॉक। और इसीलिए हमें हमारा टारगेट स्टॉप लॉसेस टू टाइम फॉलो करना चाहिए। और इसमें भी और एक चीज उन्होंने कहा है कि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी रोज देती है, पर हम उसे मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि अरे राइट। हमें इतना राइट। प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करना है। ये एब्सोल्युटली। तो मेरे लिए टेक अवे था। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या होता है ना कि ये ह्यूमन नेचर है यार, थोड़ा मिला है अभी और मिलेगा और मिल सकता है, ये मतलब साइकोलॉजी है ना। वो बढ़ते हुए पैसे हमें दिखते हैं तो लगता है और बढ़ सकता है। ये आई मीन हम कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, ये बड़ा नेचुरल सोचना है। लेकिन अपने आप को हमें क्या करना है, ट्रेंड करना है कि भाई ये ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है। मार्केट तो अपने हिसाब से चलता है, और हमको अगर ट्रेडिंग करनी है तो मार्केट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी साइकोलॉजी ढालनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ही मेरी सोच चल रही है उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। तो जब स्टॉप लॉस आ रहा है तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह आपको स्टॉप लॉस लेना है। फिर भले ही हो सकता है वो दोबारा से रिवर्स हो गया हो वो ट्रेड, लेकिन हमें रुकना नहीं है, ये नहीं सोचना है। आपको अपने प्रोसेस पे स्टिक रहना है। Can I go ahead? या श्योर, प्लीज। थैंक यू। In fact, the difference between two groups of traders, the consistent winners and everyone else, are analogous to the differences between the Earth and the Moon. The Earth and Moon are both celestial bodies that exist in the same solar system. So they do have something in common, but they are as different in nature and characteristics as night and day. By the same token, anyone who puts on a trade can claim to be a trader. But when you compare the characteristics of the handful of consistent winners with the characteristics of most other traders, you will find they are also as different as night and day. If going to the moon represent consistent success as a trader, we can say that getting to the moon is possible. The journey is extremely difficult and only a handful of people have made it. From our perspective, here on Earth, the moon is usually visible every night, and it seems so close that we could just reach out and touch it. Trading successfully feels the same way. On any given day, week, or month, the markets make available vast amounts of money to anyone who has the capacity to put on a trade. Since the markets are in constant motion, this money is also constantly flowing.
which makes the possibilities for success greatly magnified and seemingly within your grasp. I use the word seemingly to make an important distinction between the two group of traders. For those who have learned how to be consistent or have broken through what I call the threshold of consistency, the money is not only within their grasp, they can virtually take it at will. I am sure that some will find this statement shocking or difficult to believe, but it is true. There are some limitations, but for the most part, money flows into the account of these traders with such ease and effortlessness that it literally boggles most people's mind. However, for the traders who have not evolved into this select group, the word seemingly means exactly what it implies. It seems as if the consistency or ultimate success they desire is at hand or within their grasp, just before it slips away or evaporates before their eyes, time and time again. The only thing about trading that is consistent with this group is emotional pain. Yes, they certainly have moment of elation, but it is not an exaggeration to say the most of the time they are in state of fear, anger, frustration, anxiety, disappointment, betrayal, and regret. So, what separates these two group of traders? Is it intelligence? Are the constant winners just plain smarter than anyone else? Do they work harder? Are they better analysts? Or do they have access to better trading system? Do they possess inherent personality characteristics that makes it easier for them to deal with the intense do they possess inherent personality characteristics that make it easier for them to deal with the intense pressure of trading? All of these possibilities sound quite plausible, except when you consider that most of the trading industry's failure are also some of the society's brightest and most accomplished people. The largest group of consistent loser is composed primarily of doctors, lawyers, engineers, scientists, CEOs, wealthy retiree, and entrepreneurs. Furthermore, most of the industry's best market analysts are the worst traders imaginable. Intelligence and good market analysis can the road to success certainly contribute to success, but they are not the defining factors that separates the consistent winner from everyone else. Well, if it is if it is the intelligence or better analysis, then what could it be? इसमें दो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले हैं कंसिस्टेंट विनर्स और दूसरे जिसमें हम सब लोग हैं. नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है वो, इधर नेगेटिव माइंडसेट नहीं लाना है हमें. नहीं, अभी ऐसा अभी बोलना है कि हम उधर पहुंचने वाले हैं. currently we are learning हाँ, and about us he has told that हमें ऐसा लगता है कि seemingly जैसे एक एनालॉजी दिया है कि इस सेलेस्टियल सिस्टम में दो बॉडीज है, अर्थ एंड मून. जब हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमें दिखता है कि मून हमारे बहुत पास में है, मून पे पहुंचा भी जा सकता है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू द मून. तो फॉर सम ऑफ द ट्रेडर्स उन्हें लगता है कि मार्केट उनको समझ में आता है, दे कैन इजीली मेक द मनी, दे आर ऑन अ रेगुलर बेसिस दे आर ट्रेडिंग, बट उन्हें लगता है कि सक्सेस बहुत पास है. बट इट इज अगर उन सब ट्रेडर्स में कुछ कॉमन है तो वो कॉमन है इमोशनल पेन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी. दैट राइट राइट. क्या गैप है जो वो अगर उसको फिल कर पाए तो दे कैन ऑल्सो बिकम गुड ट्रेडर्स. तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है कि क्या इंटेलिजेंस से ऐसा आ सकता है. तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि फेलियर्स अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों का ही है. उसमें किटी में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सीईओज हैं. तो एक बात तो तय है कि इंटेलिजेंस और बेटर एनालिसिस इससे अच्छे ट्रेडर नहीं बन, मतलब ये जरूरी है, बट इससे अच्छे ट्रेडर बन जाओगे ऐसा नहीं है. यू नीड समथिंग एल्स. आई पर्सनली फील कि कोई और आपको नहीं बताने वाला है कि आपके अंदर ना ये प्रॉब्लम है. ये हमें अपने अंदर से खुद ढूंढ कर निकालना है कि हाँ यार, दिस वाज द प्रॉब्लम एंड हियर आई एम लैकिंग. ठीक है, और फिर उस पे वर्कआउट करना है. सो वंडरफुल. नाउ हु विल रीड नेक्स्ट? Having worked with some of the best and some of the worst traders in this business, and having helped some of the worst become some of the best,
I can state without a doubt that there are specific reasons why the best traders consistently outperform everyone else. If I had to distill all of the reasons down to one, I would simply say that the best traders think differently from the rest. I know that doesn't sound very profound, but it does have a profound implication if you consider what it means to think differently. To one degree or another, all of us think differently from everyone else. We may not always be mindful of this fact. It seems natural to assume that other people share our perceptions and interpretations of events. In fact, the assumptions continue to seem valid until we find ourselves in the basic fundamental disagreement someone about with someone about something we both experience. Other than our physical features, the way we think, what makes us unique, probable even more unique than our physical features too. Let's get back to traders. What is the difference about die way the best traders think as opposed to how who are still struggling think? While the markets can be described as an arena of endless opportunities, they simultaneously confront the individual with some of the most sustained adverse psychological conditions you can expose yourself to. At some time, everyone who trades learns something about the markets that will indicate when opportunities exist. But learning how to identify the opportunity to buy or sell does not mean that you have learned to think like a trader. The defining characteristic that separates the consistent winners from everyone else in this, the winners have attained a mindset, unique, unique set of attitudes, unique होना चाहिए, I think spelling mistake, a unique set of attitudes that allows them to remain disciplined, focused, and above all confident in spite of adverse conditions. As a result, they are no longer susceptible to the common fears and trading errors that plague everyone else. Everyone who does trades up ending up learning something about the market. Very few people who trade ever learn the attitudes that are absolutely learning about something Absolutely essential. learn the attitudes are essential to becoming a consistent winner. Just as a person can learn to perfect the proper technique of swinging a golf club or tennis racket, their consistency or lack of it will without a doubt come from their attitude traits who make it beyond the threshold of constituency. Usually experience a great deal of pain, both emotional and physical, before they acquire the land of attitude that allows them to function effectively in the market environment. The rare exceptions are usually those who are born into successful trading families and who started their trading careers under the guidance of someone who understood the true nature of trading and just as important knew how to teach it. Why are emotional pain and financial disaster common among traders? The simple answer is that most of us weren't fortunate enough to start our trading careers with proper guidance. However, the reasons go much deeper than this. I have spent the last 17 years dissecting the psychological dynamics behind the trading so I could develop effective methods for teaching the principles of success. What I have discovered in the trading is a choke full of paradox and contradictions in thinking that make it extremely difficult to learn how to be successful. In fact, if I had to choose one of the words that encapsulates the nature of trading, it would be paradox. According to dictionary, paradox is something that seems to be contradictory qualities or that is contrary to common belief and what generally makes sense to people. थैंक Financial, यू सिद्धार्थ जी के okay, लिए जोरदार तालियां. इसमें बेसिकली समरी ये है कि एक ट्रेडर को ट्रेडिंग के लिए कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, वो एक्चुअल में जो उसकी लाइफ है, जिस हिसाब से वो जी रहे हैं और रेगुलर डे टू डे लाइफस्टाइल में जिस हिसाब की थिंकिंग चाहिए उससे बिल्कुल डिफरेंट है. एंड एक्चुअली इट्स अ कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न बिकॉज एक इसको पैराडॉक्स का नाम दे सकते हैं. पैराडॉक्स इज समथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू योर बिलीफ्स, और वट एवर इज कॉन्ट्रेरी टू योर बिलीफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. So this is the summary that
Mark wants to give us. इसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई थी कि हमें ना एक एटीट्यूड ऐसा रखना पड़ेगा जो डिसिप्लिन, फोकस और कॉन्फिडेंट रहे, चाहे जो भी कंडीशन आ जाए। वी हैव टू स्टिक ऑन दैट। एंड उसके लिए ना हमें ट्रेनिंग चाहिए, या तो आपकी फैमिली ट्रेंड हो या फिर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। राइट राइट। एक वर्ड इसमें की पॉइंट सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, द थ्रेश होल्ड ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, यस। राइट। तो ये कंसिस्टेंसी वर्ड तो इटसेल्फ में आप किसी भी चीज पे अप्लाई करें तो सक्सेस में भी कहते हैं कि 95% तो कंसिस्टेंसी ही रोल प्ले करती है, राइट। तो यहाँ भी मतलब स्टॉक मार्केट में भी आई पर्सनली फील कि कंसिस्टेंसी इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजंट इट? यस मैम, जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। या प्लीज, थैंक यू। Financial and emotional disasters are common among traders because many of the prospective attitude and principles that would otherwise make perfect sense and work quite well in our daily lives have the opposite effect in the trading environment. They just don't work. Not knowing this, most traders start their career with a fundamental lack of understanding of what it means to be a trader, the skill that are involved, and the depth to which those skills need to be developed. Here is a prime example of what I am talking about. Training is inherently risky. To my knowledge, no trade has a guaranteed outcome. Therefore, the possibility of being wrong and losing money is always present. So when you put on a trade, you can consider yourself a risk taker. Even though this may, madam, please scroll. It sounds like a tricky question, is that? Is it not? The logical answer to question is unequivocally yes. If I engage in an activity that is inherently risky, then I must be a risk taker. This is a perfectly reasonable assumption for any trader to make. In fact, not only do virtually all traders make this assumption, but most traders take pride in thinking of themselves as a risk taker. The problem is that this assumption could not be further from the truth. Of course, any trader is taking a risk when you put on a trade, but that does not mean that you are correspondingly. In other words, all the traders are risky because the outcome are probable, not guaranteed. But do most traders really believe they are taking a risk when they put on a trade? Have they really accepted that the trade has a non-guaranteed probable outcome? Furthermore, have they fully accepted the possible consequences? The answer is unequivocally no. Most traders have absolutely no concept of what it means to be a risk taker because you put on trade and fully accept the risk inherent in each trade. When you fully accept risk, it will have a profound implication on your bottom line performance. The best trader can put on a trade without the without the slightest bit of hesitation or conflict, and just as freely and without hesitation or conflict. Admit it is not working. They can get out of the trade even with a loss, and doing so does not resonate with the slightest bit of emotional discomfort. In other words, the risk inherent in trading do not cause the best traders to lose their discipline, focus, or sense of confidence. If you are unable to trade without the slightest bit of emotional discomfort, specifically fear, then you have not learned how to accept the risk inherent in trading. This is a big problem because because to whatever degree you have not accepted the risk is the same degree to which you will avoid the risk. Trying to avoid something that is unavoidable will have a disastrous effect on your ability to trade successfully. Learning to truly accept the risk in any endeavor can be difficult, but it is extremely difficult for traders, especially considering what's at stake. What are we generally most afraid of besides dying or public speaking? Certainly losing money and being wrong both rank close to the top of the list. Admitting we are wrong and losing money to
Both can be extremely painful and certainly something to avoid. Yet, as trader, we are confronted with these two possibilities virtually every moment we are in a trade. Now, you might be saying to yourself, apart from the fact that it hurts so much, it is natural not want to be wrong and lose something. Therefore, it is appropriate for me to do whatever I can to avoid it. I agree with you, but it is also this natural tendency that makes trading, which looks like and should be easy, extremely difficult. Thank you so much. जबरदस्त तालियां. This paragraph tells that as a trader, you should be prepared to accept your loss or disaster with grace, not Right. allowing the grief and pain to enter your thinking process. राइट. इसमें मुझे एक लाइन जो बहुत अच्छी लगी वो यही थी कि जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं दे कैन गेट आउट ऑफ द ट्रेड इवन विद अ लॉस Loss. and doing so does not resonate the slightest bit of emotional discomfort, right? मतलब ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने किसी ट्रेड में अगर वो गए और गलत हो गए और उसमें उनको लॉस बुक करना पड़ा तो वो उनको रात भर नींद नहीं आ रही है भाई, अभी तो वो इमोशनली डिस्कम्फर्ट हो गया, ऐसा नहीं. अभी एक सोचने वाली बात है, इतने फेमस फेमस क्रिकेटर्स भी होते हैं और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इतने बड़े बड़े मैचेस में 0 पे 1 पे 2 पे ऐसे आउट हो जाते हैं, है ना? तो हर बॉल पे छक्का नहीं लगाया जा सकता है. ये जितनी जल्दी हम सीख लें उतना हमारे लिए अपने लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छा रहेगा. तो यहाँ भी इन्होंने बेस्ट ट्रेडर के लिए यही बात की दैट in other words the risks inherent in the trading, of course trading जो है उसके साथ ही रिस्क आता है, right? Do not cause the best traders to lose their discipline, focus or sense of confidence, right? तो अभी वो क्या कहते हैं, उखल में सर डाला है तो मुसल से क्या डरना. तो अगर हम आए ही यही पैसों के गेम खेलने के लिए आए हैं तो कुछ आएंगे कुछ जाएंगे. तो उसमें बेसिकली उस सीखने के प्रोसेस में अपना मेंटल स्टेबिलिटी नहीं खोनी है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट नहीं लाना है. पीस और ईज में शांत दिमाग से इंसान जितना अच्छा सोच सकता है उतना वो जब उसका माइंड परेशान हो तो राइट डिसीजंस नहीं ले सकता है, राइट? एनीवन एल्स जो कुछ ऐड करना चाहे और मैं मिस कर रही हूँ? मैडम, इसमें ऑथर ने ये भी बताया है कि हर ट्रेड में कुछ रिस्क होता है, राइट, एंड इट इज कॉमन. वट एवर ट्रेड यू आर गोइंग टू टेक, इट इज गोइंग टू हैव सम रिस्क. यू आर अवेयर ऑफ इट, लेकिन you do not accept to take the risk when trade goes against you. So the Right. two most important things he has mentioned, which are top in the list, is first is your acceptance of being wrong, and you accept that money can be lost. absolutely, It is there. We think it before taking trade, but when the trade goes against us, we do not believe कि ऐसा हो रहा है. They are the top in the list. Why the traders are far away from success? राइट. और ऐसा नहीं है कि जो आज सक्सेसफुल ट्रेडर आपको दिख रहा है कि भाई उसके सारे ट्रेड्स राइट जा रहे हैं, शुरुआत में उसने गलतियां नहीं की होंगी, है ना? वो आज मतलब उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर वो वहां तक पहुंचा है. तो कुछ सीढ़ियों पे वो गिरा होगा, कुछ सीढ़ियों पे वो भी लड़खड़ाया होगा. Yes, yes. और And, उसकी जर्नी भी बहुत स्मूथ नहीं रही होगी. yes, and somehow he has accepted being wrong is also right, and it's a part of the game that you can lose money also. Yes. It was a wonderful takeaway that markets are neutral. It just provides information. And how we perceive that information is actually different for everyone. And if trading में अगर सक्सेस नहीं है तो इट इज जस्ट अबाउट कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, एंड वेदर वी आर एक्सेप्टिंग और इट इज इन सिंक विद द मार्केट और नॉट.
if information आ रही है but we are not in the sync, then we makes the losses. So it is about accepting and being in the sync with the market. राइट राइट एब्सोल्युटली वही बात, मतलब जो मैंने बोला कि आपको बेसिकली अपना माइंडसेट मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बिकॉज मार्केट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पहचानता है, राइट? हमें अपना ह्यूमन बिहेवियर और माइंड साइकोलॉजी जो है वो चेंज करनी है मार्केट के अकॉर्डिंग। बाकी नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। सिर्फ मुझे आप सबके 5 मिनट्स और चाहिए। लेट्स डू आवर गोल राइटिंग सेशन एंड आज हम उसमें 5 ग्रैटिट्यूड और ऐड करेंगे। जो डायरी मैंने बनाने के लिए बोली है उसमें आप 3 to 5 अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स लिख सकते हैं और 5 आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। आप आई मीन इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, यू कैन स्टार्ट राइटिंग, मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे सपोज मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, तो मैं लिख सकती हूँ कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्यार करने वाले माता पिता हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राइट? तो पीने के लिए मेरे पास पानी है, हवा है, घर है रहने के लिए, एनी थिंग, कोई भी जो पहली 5 चीज आपके दिमाग में आ रही है वो आपको लिखना है। और 5 गोल्स आप लिख सकते हैं या 6, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। सो इतना लिखने के बाद फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो अभी लीव मत कीजिएगा, प्लीज राइट डाउन। मैं भी लिख लेती हूँ जल्दी से। यस मैम, मैम सूर्य प्रकाश शुक्ला मैम। या श्योर, प्लीज। मैम मैं भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जीवन मिला, और दूसरा जीवन मिला और एक ऐसे परिवार में रहे कि हम थोड़े बहुत चीजें अपने आप से मैनेज कर पाए। नहीं तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी लाइन से बहुत नीचे हैं और बहुत सारे अभाव की वजह से अपना जीवन जी रहे हैं, फिर भी हमसे खुश हैं और हम उनसे एक बेटर लेवल पे हैं, फिर भी हमारे अंदर पता नहीं क्यों इतना मतलब असंतोष इतना क्यों है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इसलिए फिर भी आप उनको देख करके अपने आप को संतोष व्यक्त करते हैं कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम थोड़े काबिल हैं, उनसे तो काबिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो वी कैन वाइंड अप। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, आगे सेम बुक रीडिंग सेशन में।